Kashyap, and from today I will start a question and answer series of Civil Procedure Code 19. This session is going to be very useful for judicial exam, APO exam, upcoming LLM upcoming exam, and LAT COT CLAT for these will be very useful for them also. So let's start, guys. CPC, that is Civil Procedure Code or the Code of Civil Procedure 1908, is consist of one order and uh, sections. It is divided into order and section. So CPC has 158 section and 51 order. So basically CPC has 158 sections and 51 order, right? And it become operative from 1st of January 1909. So here we have three facts relating to Code of Civil Procedure 1908. The first one is it has 158 sections and 51 order, right? And it become operative from January 1909. The first one is it has 158 sections and 51 order, right? And what is its extent? So, after the J&K Reorganization Act, the Code of Civil Procedure shall extend to whole of India except state of Nagaland and tribal area. Okay, right. Now, let's move on to definition clause of CPC. So, decree under Civil Procedure Code 1908 has been defined in its which section? So, decree is defined under section 2, clause 2. Decree is defined under section 2, clause 2. Formal expression of an adjudication which so far expressing it conclusively determine right of the party is what? Decree. So it is a formal expression of an adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine the right of party. This is a decree which is defined under section 2 clause 2. So these are the definition clause of CPC 1908. So we have got the answer of what is decree under section 2 clause 2. Now the essential element of a decree. What is the essential element of decree? So there must be an adjudication, okay? The determination must be of conclusive in nature. And the third one is the adjudication must have been done in a suit. So this is a element of decree. What? There must be an adjudication. The determination must be of conclusive in nature. The adjudication must have been done in a suit. Now move on to the next. What a decree can be. So what are the type of decree? So decree are either preliminary or final. So two type of decree, preliminary decree and final decree. The CPC recognizing what type of decree? So it recognize both preliminary and partly final and partly preliminary.
okay, and final decree. So it recognize all type of decree: preliminary decree, partly preliminary, and partly final, and final decree. So decree may be what type of? So it may be either preliminary or a decree is preliminary. uh, कब एक डिग्री को प्रीलिमिनरी कहते हैं, ठीक है? सो व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट is completely disposed of, then this decree is called preliminary decree, right? A decree become final. So a decree become final when it conclusively determines the right of the parties and no appeal has been preferred against the decree. So, a decree becomes final when it conclusively determines the right appeal has been preferred against that decree. So, basically, when a right is finally determined and no appeal left for that, this is decree in final. So, a decree can be passed in a suit of what type of suit में प्रिलिमिनरी डिग्री पास किया जाता है. सो इट कैन बी पास्ड इन पार्टीशन सूट, इन पार्टनरशिप सूट, एंड फॉर पोजीशन एंड मैसने प्रॉफिट. So a preliminary degree can be passed in a suit for partition, suit for partnership, and for possession and machine profit. Okay. So a degree means and include what it means and what it include. So a decree is a formal expression of an adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regards to all or any of the matter in controversy in the suit, and uh, second is what it include. So it include rejection of plaint also. So, what do we understand from this? A decree is a formal expression of an adjudication which, so far as regards determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, and also include rejection of plaint. Okay, so rejection of plaint is in Order 7, Rule 11. So, which of the following is not a content of decree? So, content of decree क्या नहीं होता है ना? So, detailed statement of the case is not a content of decree, right? Just 1 second. So, yeah, I was right. Order 7, Rule 11 is rejection of plant. Okay, let's move on to the another question. Which of the following is ये तो हो गया. Under civil procedure code, which of the following statement are true regarding a decree? So, a decree. What are true regarding a decree? So, conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter in the controversy in the suit. So, this is correct. This is a decree. This is the element of a decree. So, this is right. Decree can be partly preliminary and partly final. ये भी सही है. This would not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. ये भी सही है. So all three are correct regarding decree. So
It is a conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter in the controversy in the suit, and it can be partly preliminary and partly final. So, and this would not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. ऑब्वियसली जो जिसमें अपील अगर बाकी ही है तो फिर वो डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि वो फाइनली एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइन तो नहीं हुआ है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो नॉट अमाउंटिंग टू डिग्री है? एन ऑर्डर अपॉइंटिंग अ कमिश्नर, this is not a decree. An order amount appointing a commissioner is not a decree. An order dismissing cross objection, an order of abatement of a suit is also a decree. An order rejecting a plaint is also a decree. Rejection of plaint order 7 Rule 11. Abatement of suit order 22 is also considered as a decree. An order dismissing cross objection. ठीक है. So under CPC, which one of the following is not a decree? So इनमें से नहीं है. Dismissal of suit in default, ये डिग्री नहीं है. क्यों नहीं डिग्री है dismissal of suit in default? Because dismissal of suit in default जो होता है वो merit पे और heard and finally decide नहीं होता है. वो dismissal है, इसीलिए वो एक डिग्री नहीं होता है. But rejection of plaint is a decree, and dismissal of suit in default and rejection of plaint ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक है एक नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा. इसलिए आंसर होगा डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट इज द राइट आंसर. सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ डिक्री. प्रोवाइड द डेफिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ डिक्री. सो डेफिनेशन ऑफ डिक्री में कौन कौन इंक्लूड होगा? ऑर्डर पास्ड रिजेक्टिंग अ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11. ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात कर रहा है और ये रिजेक्शन प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री, इसीलिए ये डिक्री होगा. दूसरा बात कर रहा ऑर्डर पास्ड अलाउइंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर CPC. सो ये भी ऑर्डर पास्ड अलाउइंग एन application under order 7 rule 6 CPC is also a ingredient of decree. So this is decree, ठीक है ना. But order of dismissal of suit in default, this is not a decree, as we have already talk about it. Dismissal of order 1 rule 10 CPC application. So this is also not a decree. Order rejecting a plaint under order 7 rule 11 of CPC. ये क्या होता है? ये एक डीम डिक्री होता है. क्या? डीम डिक्री. Order 7 rule 11 is a very very important order, and it is a rejection of plaint, and rejection of plaint decree. And, we will come one by one on that also. Under the Code of Civil Procedure 1908, which of the following statement is not correct? So इनमें से कौन correct statement नहीं है? Decree include the rejection of plaint, ये सही है because it is a deemed decree, and rejection of plaint is mentioned under order 7 rule 11. Determination of any question under section 144. So this is also correct. Decree include the determination of any question under section 144, right? Decree does not include any order of dismissal for default. So default में जो dismissal होता है वो decree नहीं कहलाती, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सही correct answer है. Decree include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब अपील बाकी है, जब तक अपील तक वो डिक्री नहीं कहलाएगा, है ना, बिकॉज वो फाइनली एंड कंक्लूसिवली एडजुडिकेशन डिसाइड नहीं हुआ है, एडजुडिकेट नहीं हुआ है. सो दिस इज द राइट, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट option of this question. So this is not decree. Which of the following order is not a decree as per the definition of decree contained in the. यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि इसमें से कौन डिक्री नहीं है, है ना.
तो ऑर्डर ऑफ रिमांड क्या डिक्री होगा? नहीं, ये तो एक ऑर्डर है, सो ये एक डिक्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ अवेटमेंट ऑफ सूट, अवेटमेंट ऑफ सूट हम लोगों ने पढ़ा। अवेटमेंट ऑफ सूट ऑर्डर 22 में मेंशन्ड है, अवेटमेंट के रिलेटिंग बात करता है ऑर्डर 22, और ये डिक्री होता है, ठीक है। ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, नो कॉज ऑफ एक्शन मतलब ये कॉज ऑफ एक्शन लाई नहीं करता, ये भी एक डिग्री है। ऑर्डर होल्डिंग दैट अपील इज नॉट मेंटेनेबल, जहाँ पे अपील नॉट मेंटेनेबल है तो वो सूट ऐसे ही खत्म हो गया, फाइनली एडजुडिकेट हो गया है, तो ये भी एक डिक्री कहलाएगा। बट ऑर्डर ऑफ डिमांड इज नॉट अ डिक्री, राइट? Guys, if you like the session, please do like, share and subscribe, and you will get ऐसे ही informative session on a regular basis. अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following determination does not come under the definition of degree? So फिर से सेम क्वेश्चन है, उसी पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अब बात करते हैं कौन सा इसमें डेफिनेशन के डिग्री में, डेफिनेशन ऑफ डिग्री में नहीं आता है। An adjudication which conclusively determine the right of the party with regard to some of the matter in issue before the court। हाँ, अगर कोई भी एडजुडिकेशन जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू सम ऑफ द मैटर इन द इशू बिफोर द कोर्ट, तो वो भी डिग्री होगा, क्योंकि मान लो 4 इशू फ्रेम हुआ है, अगर वो 3 पे डिसाइड हर्ड एंड डिसाइड हो चुका है फाइनली, तो वो 3 के रिस्पेक्ट में वो डिग्री कहलाएगी। तो ये बात सही है। अब बात कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन दिया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। हम लोगों ने अभी बात किया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है, और इसको डीम डिग्री कंसीडर किया जाता है। ओके, उसके बाद सी है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। So determination of any question under section 144 of CPC is also considered as decree, but dismissal of suit for default. So dismissal of suit for default is not considered to be a decree. अब बात करते हैं, decree shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144 of CPC। ये क्या है? ये सही है या गलत है? सही है ना? सही बात है। हम लोगों ने अभी देखा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 एंड determination of any question within section 144 of CPC is considered as decree। So ये राइट है। What will be the nature of an order passed by court rejecting the plaint for non-payment of court? So एक नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी के द्वारा जो रिजेक्शन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, वो क्या कंसीडर किया जाएगा? वो भी एक डिक्री ही कंसीडर किया जाएगा। सो द नेचर ऑफ एन ऑर्डर passed by court rejecting the plaint for non-payment of court fee will also be considered as a decree under section 2 clause 2। A suit for partition contain which of the following degree? So a suit of partition contain um, both preliminary and final degree, right? Because partition में preliminary and final degree दोनों आता है। preliminary degree partition में कैसे समझाता हूँ मैं? Let's suppose there is a partition suit, तो उसमें पहले क्या होता है? शेयर डिसाइड होता है। ये हो गया प्रिलिमिनरी डिग्री, शेयर डिसाइड होना कि इसको ये मिलेगा, है ना? बट अब कौन सा पोर्शन कौन किसको मिलेगा, ये जब फाइनली डिसाइड होता है तो वो फाइनल डिग्री होता है। तो इसमें पार्टीशन सूट में दो प्रिलिमिनरी, एक प्रिलिमिनरी आता है, एक फाइनल डिग्री आता है। होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब बात करते हैं अंडर द सीपीसी डिग्री डज नॉट इंक्लूड। अब डिग्री क्या ही इंक्लूड करता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये द रिटर्न ऑफ द प्लेट, ये डिग्री नहीं है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये भी डिग्री है। द रिजेक्शन ऑफ प्लेट, ये भी डिग्री है। एंड ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 सीपीसी, ये भी डिग्री है। बट द रिटर्न ऑफ प्लेट नॉट रिजेक्शन, रिटर्न इज डिफरेंट एंड रिजेक्शन इज डिफरेंट, राइट?
अब बात करते हैं टर्म अवार्ड एंड डिक्री इज यूज टू डिनोट, है ना। यूनिट क्या करता है? देखो, ऑर्डर ऑफ सिविल कोड, आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल कोड, कोऑपरेटिव कोड, ईटीसी, है ना। ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ सिविल कोड, आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल कोड एंड कोऑपरेटिव कोड को अवार्ड एंड डिग्री यूज टू डिनोट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिक्री? तो डिक्री कौन कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट, ये डिक्री है, हम लोगों ने देखा। और इसका चर्चा कहाँ पे हुआ? वेयर इट इज डिस्कस अंडर ऑर्डर 22। एंड डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी डिक्री है ना। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड मतलब लिमिटेशन से बार्ड हो गया, तो ये भी एक फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो अब उस पर आप फर्दर सूट नहीं ला सकते हैं, तो ये भी एक डिक्री ही हो गया। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर द वांट ऑफ एविडेंस, तो डिसमिसल ऑफ सूट जब भी होगा तो ये फॉर द वांट ऑफ एविडेंस जब होगा तो ये भी एक डिक्री कहलाएगा। सो ऑल द करेक्ट। Guys, there is a two very important section under CPC, which is decree holder and judgment debtor, है ना। So decree holder means, what do we mean by decree holder? A person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. So this is decree holder is the person in which favor a decree has been passed and execution has been made. So that person is known as decree holder, and it is defined under which section? Section 2 clause 3 of CPC. So section 2 clause 3 of CPC define or give the definition of decree holder. And who is decree holder? So decree holder is a person in whose favor the judgment has passed and execution has been made, है ना। So, and what is a judge? Is a person against whom a decree is passed simply। तो डिक्री होल्डर कौन हो गया? जिसके फेवर में डिक्री पास किया गया है और हु इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, है ना। सो दैट पर्सन इज डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर is that person against whom the decree has been passed। And what a degree holder, a degree holder जो कि need not be a party to the suit, भी हो सकता है जो कि पार्टी ऑफ द सूट नहीं हो सकता है, सूट नहीं होगा, ठीक है ना। एंड द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिव। डिग्री डिग्री होल्डर केवल प्लेंटिव ही नहीं होगा, डिफेंडेंट भी हो सकता है। कोई भी डिग्री होल्डर बेसिकली कौन होता है? वही जिसके फेवर में डिग्री पास किया गया हो और जो कि केपेबल है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। in his favor, then that person is decree holder, and judgment debtor is that person against whom the decree has been passed. So these are the two very important definition in CPC: the decree holder and judgment debtor. Right, guys? Did you like the session? If you like it, then let me know in the comment section. And also, you can like the session, share the session, and subscribe the channel. Hmm. So decree holder and judgment debtor. So decree holder is defined under section 2 clause 3 and judgment debtor is 2 section sub clause 10। जजमेंट डेटर इसे वो याद रख लेना। अब बात करते हैं हम लोग मेशने प्रॉफिट, है ना। मेशने प्रॉफिट कहाँ डिफाइंड है? सो इट द डेफिनेशन ऑफ मेशने प्रॉफिट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 clause 12 of CPC 1908। So मेशने प्रॉफिट is defined under section 2 clause 12।
and what it says. So machine profit of a property. So machine profit is always related to a property, right? The first ingredient of machine profit, it is always related to a property, and the property can be of any kind, basically movable and movable, immovable. But generally in CPC, we see things related to immovable property, but it can be. So machine profit of property means those property which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom on such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession. So, what is machine profit? Machine profit जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो किसी के प्रॉपर्टी का wrongful पोजीशन से रिलेटेड होता है. अगर मान लो एक ए है एंड एक बी है, ए की प्रॉपर्टी को बी ने wrongfully अपने पोजीशन में ले लिया है, तो अब उस प्रॉपर्टी से वो जो भी एक मतलब ड्यू डिलिजेंस करने से जो भी एक इनकम जब तक उसके रॉन्गफुल पोजीशन में रहता है, एक ड्यू डिलिजेंस से जो पता किया जाएगा कि इससे कितनी इनकम आ सकती है, तो वो इनकम जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि मतलब जो इनकम एज अ प्रॉफिट कंसिडर किया वही मेशनरी प्रॉफिट होगा. ठीक है, बट मान लो उसमें अगर उसने कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह करवाया है, प्रॉफिट नहीं होगा. ठीक है, दिस इज मेशनरी प्रॉफिट. बेसिकली मेशनरी प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द wrongful possession of a property. Okay, this is that mechanism, and it is defined under section 2 clause 12. So the profit earned from the wrongful possession of a property, that is mechanism profit. So what shall we also include in चलो, तो both the profit including interest. हाँ, ये भी याद रखना है कि जो इंटरेस्ट होता है ना उस प्रॉफिट का, वो भी, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है ना कि मान लो अगर तुम्हारा कोई नेशनल प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मान लो तुम कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तुम उसको अगर बैंक में रखो तो ये रीजनल है कि तुमको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. तो उस केस में भी अगर कोई रॉन्गफुल पोजेस्ट किया हुआ है तुम्हारी प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी से वो जो प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो उस पे उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट भी कंसिडर किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रॉफिट. तो वही यहाँ पे कह रहा है, both the profit including interest which the person in wrongful possession of such property actually received, and those profit with interest which might be received from therefrom with ordinary diligence, है ना, ordinary diligence by a person in wrongful possession. So this is machine profit for you guys. So as for section 2 clause 12, machine profit of a property are profit received by a person in क्या होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा. So you guys can write it also in the comment section. So machine profit are profit received by a person in wrongful possession of the property, right? This is the main ingredient. The property must be in the wrongful possession of that person, and that person is liable to give the machine profit to the real owner. So machine profit means what? The machine profit is a profit received or could have been received by a person in wrongful possession of the property. Machine profit shall not include what it cannot be included in machine profit. So profit due to the improvement made by a person in wrongful possession, which I have already told, that if that person which is having the wrongful possession of that property, if he do some improvement to that property, then that improvement will not be considered as the wrongful as a machine profit. For example, let's suppose I have wrongfully possessed your property, and that property I built a cinema hall. So you cannot claim that the profit earned by that cinema hall uh, can be given to you because it is a machine profit. No, it is not a machine profit, because with a due diligence, if you apply that, that is not going to be the machine profit, because the machine profit is only considered by the due diligence. Okay, right? Which of the following is not correctly matched under CPC? Okay. अब यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज की बात कर रहा है कि इसमें कौन
तो ऑब्वियसली सेक्शन 2 क्लॉज 5 ये बात करता है फॉरेन कोर्ट की, ठीक है। 2 क्लॉज 6 बात करता है फॉरेन जजमेंट का, एंड 2 क्लॉज 11 ये बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, एंड क्लॉज 2 10 जो है वो मैसने प्रॉफिट से रिलेट नहीं करता। 210 मैसने प्रॉफिट से रिलेट करता है। 212 एंड 210 किससे करता है, अभी हम लोगों ने देखा था जजमेंट डेटर से। एंड जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर किससे रिलेट करता है, 2 क्लॉज 3 से, जजमेंट डेटर 2 क्लॉज 10 से, एंड मैशने प्रॉफिट 212 से, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 से, फॉरेन कोर्ट 25 से, एंड फॉरेन जजमेंट 26 से। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, एंड डिक्री 22 से। So these are the important definition we have to keep in our mind, and मैशने प्रॉफिट 212 से आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजीशन ओवर अ प्रॉपर्टी इज, ये क्या होता है, ये तो मैसने प्रॉफिट होता है, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज मैसने प्रॉफिट। अब आई थिंक होप यू गाइस आर वेरी वेरी क्लियर इन दिस concept of मैसने प्रॉफिट। What is a मैसने प्रॉफिट? Hmm. मैसने प्रॉफिट can be claimed regarding अभी मैसने प्रॉफिट can be claimed regarding immovable property only, both immovable property only। यार यहाँ पे ऑप्शन में तो ये दिया, बट मेरे को लग रहा है कि दोनों के रिगार्डिंग होना चाहिए, बट ओके वी विल सी इट, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं जजमेंट की। तो जजमेंट जो कि डिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 9 ऑफ सीपीसी। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जजमेंट, है ना। तो जजमेंट होता है एक स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। व्हाट, अ स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, मतलब जो ऑर्डर या डिक्री जो दिया गया है वो किस ग्राउंड पे दिया गया है, ये जजमेंट होता है ना। एंड जजमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 9, राइट। थैंक यू गौरव, थैंक यू। जजमेंट क्या कंटेन करता है, व्हाट जजमेंट कंटेन। सो अ जजमेंट कंटेन concise statement of the case. What concise statement of the case? The decision on the point of determination and the reason thereof. What? The decision on the point of determination and the reason thereof, and the point for determination. These all are the contain of judgment. अब हम लोग लीगल जजमेंट हो गया, जजमेंट की बात हम लोगों ने कहा 2-9 जजमेंट है ना, और 2-10 क्या है, जजमेंट डेटर, एंड 2-3 क्या है, डिक्री होल्डर, एंड 2-2 क्या है, डिक्री है। एंड फॉरेन कोर्ट क्या है, 2-5 है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन जजमेंट क्या है, 2-6 है फॉरेन जजमेंट जहाँ पे डिफाइंड है। एंड 2-12 क्या है, मैशने प्रॉफिट। 2-11 क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये सब बार बार रिकॉल करो ताकि वी गाइस कैन इजीली रिमेंबर इट एंड कीप इन आवर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब हम लोग बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। तो व्हाट इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11। लीगल रिप्रेजेंटेटिव means a person who is मतलब who is in law represent the state of the deceased. The person who in law represent the estate of the deceased is known as legal representative. So guys, there is a very important question arising from legal representative, that who is a legal representative. Legal representative are those who are
in law represent the estate of a deceased are considered as legal representative. What is not included in the definition of legal representative under Code of Civil Procedure 1908? तो Code of Civil Procedure 1908 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो अ पर्सन हु डज नॉट इन लॉ represent the estate of the deceased person. Obviously, because in law, the person who can represent the estate of the deceased is only considered as the legal representative. But who is not in law represent the deceased person, he cannot be considered as the legal representative. है ना? Any person who intermeddles with the state of the deceased, obviously, the person who intermeddles with the state of the deceased can be a legal representative. Where a party sues in a representative character of the person on whom the state devolves on the death of the party so suing or sued, obviously he can be considered as the legal representative. A person who in law represent the state of the deceased person, obviously because the law gave him the right to be the legal representative. Which of the following is not a legal representative under Section 2, Clause 11? So, under Section 2, Clause 11, who is not considered to be the legal representative? So, executor and administrator, he can be considered as the legal representative because the law gave him the power to be. Official assignee or receiver. No, official assignee and receiver cannot be considered as the legal representative. Hindu co-partner. Obviously, Hindu co-partner can be considered as a legal representative because the right vested in him. Residuary legatee. Residuary legatees will also be considered as the legal representative. So, official assignee or receiver cannot be considered as a legal representative. A legal representative under Code of Civil Procedure means what it means. So, a person who in law represents the state of the deceased is considered as the legal representative in the law, है ना, in CPC. A dies leaving behind a son X. So, एक पर्सन ए है जो कि उसके डेथ के बाद उसका सन जो है एक्स है एंड वो जो सन एक्स है वो एंड मैरिड अ डॉटर वाई एंड अ सॉरी फॉर द मिस्टेक ए डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन एक्स एंड अ मैरिड डॉटर वाई सो ए मर जाता है उसके पीछे उसका एक बेटा एक्स है और बेटी जो है मैरिड है वो वाई है ठीक है A suit filed by A after his death can be continued by. So obviously, इन दोनों के द्वारा consider किया जाएगा because both are the legal and there is a shall provision that the legal heir shall always be considered as the legal representative because it is her right, है ना, to be the legal representative. So both the son and the married daughter also be the legal representative of that person A who died. Legal representative as defined in section 2 clause 11 of CPC does not include. It does not include. So it does not include natural hair इसको include करेगा. Legatee who obtain only a part of the estate of the deceased ये भी include होगा. Donee of the suit property. Donee of the suit property भी होगा. Person who is neither a legal heir nor an intermeddler with the state of the deceased. जब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है तो ये नहीं होगा है ना. So with this I am going to end this session. We have almost covered the definition clause and tomorrow we will come up with the next provision of CPC. Thank you very much for joining. I'm going to continue this series. I just want your participation and contribution in this session. So, guys, if you like my explanation, like my approach, then please do like, share, and subscribe. Thank you very much for being the part of this journey.